All other things are totally no meaning. That is to help you to state of presence. In state of presence, if you have achieved, you will see that you are unfocused. Your mind remains unfocused, silent, still, quiet. The aperture is very big. When you are focused, aperture is very narrow. You are seeing one feeling, one thought, and that covers the whole universe. Just observe. When a thought appears or when a feeling appears, there is no other space left. Consciousness, by its nature, whatsoever perceives, it becomes it. Its becoming it means identification. Thought appears, it does not mean that when thought appears, you identify. No. Thought means identification. Feeling means identification. Isn't it? You are not able to watch it as a separate from you. You are it. If you are trying to remain attentive, okay, then remain attentive. But I think remaining attentive maybe is more difficult than remaining unfocused. Just remember and become unfocused. Means don't focus at any point. Watching the creepers, or the grass, or the sky, or the traffic, or the people. Just make an attitude that all the time when you are practicing, remain unfocused. And you have to persistently do it. Only then some result is possible. It should be persistent. Once it becomes natural, within a period depends on you. It may be one life, it may be 108 life. हो जाए, or few months, or few years. It depends on you. When you are paying again and again attention or remembering to remain unfocused, the period will be becoming more less and less. Suppose in first remembering you are unfocused, then you forgot. It may take 1 hour to remember again. Okay? Again it take 1 hour to remember again. But slowly this period will be narrowed down. Half an hour, 15 minutes, 10 minutes. A moment will come, you have not to remember, it will remember you. Kabir has said, Pache pache Hari pire, kahat Kabir Kabir. Hari means state of presence. Now the state of presence or unfocusedness will call you again and again, will knock you. This will happen. And then slowly, it will become just natural. All the effort is gone. In the beginning, it is an effort, not only effort, arduous effort, I call it. Here, the doer has to do something.
Here the doer is needed. Otherwise, there is no doer. This self remembering will not happen by itself. As I say, things are happening and there is no doer. Nobody asks. But this self remembering is not happening. It cannot happen. This self remembering, remaining attentive, are trying to be present the way you understand, you have to do it thoroughly, properly, continuously, day and night, minute by minute. It depends on your interest. And the state of presence will allow you to enter into the fourth state of consciousness. Next day, I was talking about the fourth state of consciousness. When you are totally set, stabilized, rooted in the fourth state, you are called a Buddha, a awakened one. If you feel like, you can declare that I am awakened one. हो जाए. But most probably, you will find there is no urge. Most probably, you may find that there is no urge and there is no need to declare. People who are sensitive will start noticing something that something is different. But that is another story. That is not our question. So if you are trying to be attentive, there is no need to try unfocused. You have to try one thing. Whatsoever suits you. If remaining attentive, like once I told you that be alert, be aware when you are eating about the taste. Okay? I give you second thing because you don't ask, then it goes waste. Shall I tell you second thing? Okay, who wants? Everyone. I thought if there are one or two, then I come and tell in the ear. When you are talking, all the time you are talking something. You cannot resist talking. There are four main features of man. One is talking, the highest. One does not know that one talks too much. Even the good thing about it is he does not know. Second thing is lying. He lies. You find out which feature you have. You must have one feature. Third is assuming. I say something, you assume second thing. Oh yeah. I am surprised. I, am, I ask my friend questions, Tanmayo, Manish, Madhukar. They answer something else. Assuming happens so fast, and sometimes I laugh at myself. Somebody comes, he says something, and I hear something else. Oh yeah. But I don't assume, though the assumption has happened already. But I don't get identified. That is where it is little difference. I ask what you have said. Please say it again. Yeah, that is how I do. Whether I have heard the same thing, what you have said, or I have heard something else. And then I come to know immediately in the machine, it happens. Something is said and something is understood.
But a person who assumes immediately follows that which he has assumed. So this is the third feature. The fourth is imagination. You go on imagination. All the time you are imagining something or other. That is why all the Buddhas says whether you are sleeping or you are awake because of this imagination. Continuously it is there. As if you are seeing the dream. It's like a dream-like phenomenon. Though you are walking, though you are talking also with somebody also, but at the same time, imagination is happening. These are the main four feature. Which feature? Basically, you have all the four. But one will be prominent. Which is prominent, you decide. My answer would be you are asking a question and answering yourself. In a first step, to keep a silent mind, there is no other way that putting deep attention on what we are doing to avoid thoughts. No. If you are putting attention what you are doing, you will be skillful in outer attention. You are conscious but conscious of the outside things, outside world. That is how if you meet corporate people, most of them they are very alert, very conscious, but they are not meditator. Oh yeah, they have practiced outside awareness, how to talk, how to stand, how to behave, how to sit, what to say, what not to say. They have practiced it. And they are slave to it all the time you watch. They are tense. Now they are trying to meditate. In the corporate world, now it is becoming a fashion to call somebody who can let them meditate. There can be outer awareness, there can be inner awareness. A saint is one who is not conscious of the outer world. He is just conscious of the inner world, what is happening inside. He is focused at that. You are focused at the work. Okay, you are arranging class. Okay. So your focus, your attention, your alertness is there. To become aware of inner arrangement, you are arranging your inner stuff. Then the awareness should divert it. Either it depends. All the saints, if you observe their life, read their life, they are not worried what is happening outside world. When Ramana Maharishi was asked again and again that war is happening and many people are killed, he will not give proper answer. He will say, you just find who is asking the question. Oh yeah. That was the main thing. The only thing who is asking. Ask yourself who am I and see. Now I was practicing it for very, very long. I could not understand it basically. Again and again, the whole day I was asking, who am I? But there is nothing.
Very, very lately I understood what he meant and why he was using this technique. He is sitting silently. If you have seen, there is a 6 by 3 table, bed kind. He's sitting like this, watching like this, saying nothing. Whenever people will come, ask any question. If he feels like tells few words, but will not look at you, will answer in 2 line, 3 line, few words, but will not look at you at all. He will remain seeing in nothing. All the time, you will see his eyes unfocused. But if you can see, you will see he's totally present. Not even for a single moment he is absent, he is present. So awareness can be of the outer, can be of the inner. Now Osho is a very different example of both. He is aware outside, inside at the same time, which is even more arduous. हो जाए? We cannot become aware of one dimension. His arrow remains double all the time. I was trying this kind of awareness for a long time. I became so tense and looked like a donkey. So serious, so serious. I was famous as a very good seeker, staunch seeker in my friends at that time. I became very tense because all the time I was practicing something or other, and nobody was there to make me little understand more whether I'm right or wrong. What I understood, I practiced. Oh yeah, here you have chance all the time. Ask me as many questions as you want. I had nobody at that time. Few people find very difficult to come to a state of presence. Then there are methods, step by step. First, you become aware while walking. Just remember your steps. Okay. Each step you are trying to be present. This is, you can call becoming conscious of body movements while walking. You can see how this is happening. Or while talking, how your movement. Become conscious of the movements first because it is the outer boundary. Then try to become conscious of the thoughts. Little more difficult. Then try to become conscious of the feelings, which is even difficult. And then try just to become conscious, attentive, aware, just. I am straight away saying be attentive to your attentiveness. Hmm? Many ways it is said. Okay, I give you one more technique. Find out whether it suits you. While you are talking, listen to your own sound. Can you do that? You are talking. You are listening to the others, that is automatically. That is mechanically. Now, if you start listening your own sound, it is not mechanical. You have to remain present for that.
Remain present means what? You have to remember that you have to listen to your sound, isn't it? This is second technique I am giving you. While talking, listen to your own words, your own sound, and you will see you will forget. Forgetfulness is the nature of the mind, self remembering. You have to do there where the doer actually enters. That is why the doer is there. He has to do this work. All other works are happening, is done by God, or nature, or whatsoever. They are just happening. You have not to do. You have not to breathe. But you have to remember. You have to remember yourself. In a first step, to keep a silent mind, there is no other way than putting deep attention on what we are doing to avoid thoughts. But further on, in a second step, once we have learned to keep the mind silent, we don't need to put that much attention for listening instead of hearing, or looking instead of seeing, might bring other thoughts. So, at a certain stage, we should only hear, see, and smile naturally. Yes, when it becomes natural after a long work, then you are the most relaxed person on this earth. Now forget everything. Just forget everything. There is no need to keep anywhere any kind of attention. If you see Osho, up to the last breath, his movements were in awareness. You can see it, watch the video. Don't compare myself with Osho. At one moment, I forgot the outer. Go to hell, I am not going to be aware. Then I put my total energy into the inner. And now I don't mind whether I am conscious, unconscious, super conscious, demi conscious, semi conscious, does not matter. Once the acceptance happens, you can forget. You can afford to forget. It is up to you. You choose. Now, what people think about me, how they compare me, whether they bow down to me, whether they respect me, whether they think high of me or low of me, don't bother me at all. I am simply myself, that's all. Out of that simplicity, sometime this 10-day camp happens. It is not my need, and I am not forced by any compulsion from any side, not from within, not from my master, not from it. It just happens. So I say, okay, let us have 10 days. And for that, I try to make it the best from my side. That's all. This is first time we have included our food. We are cooking our food. Next time it will be even better. If there is a next time, who knows whether it is. It was my desire to give good food, nourishing food, little tasty also, but good for meditation. So I think, do you have any complaint for the food? Pardon? Fantastic, wonderful. Madhukar, how you say? Wonderful, wonderful.
As Krishna Murti Arvindo said, pay attention to your studying, but don't forget there is a cobra in the room. Good. Can you remember that cobra in the room all the time? Or while you are walking, a cobra is following you. Or while talking, cobra is coming near to you. Can you remember that? That too is a remembering. Cobra will make you attentive. That's all. That is the purpose. Means just remember. Remembrance is the purpose. So it can be said in many ways. The cobra is in the room. It means you cannot become unconscious. You cannot afford. Isn't it? Very good analogy. Means keep alert. That cobra, if you don't keep alert, you may be bitten. There is a cobra in the room. Is my understanding right? Thank you so much. Yes, you are great, Martha, but you have not written your name. Okay, now I understand your handwriting. श्री गुरुदेव प्रणाम। कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है कि मन में जो सवाल उठते हैं उनका जवाब या तो आप क्वेश्चन आंसर के वक्त ही देते हो या फिर कभी अपने आप ही सवाल का जवाब मन में जन्म लेता है। जब तुम ध्यान में प्रवेश करने लगोगे तो यह हो सकता है जहां हम ना दिखें, अनेक दिखें। अभी आप लोगों के पास मोबाइल होता है। यहां से बैठे बैठे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मून में भी कोई बैठा हो, टिक 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 टिक, हेलो, यू स्टार्ट। लेकिन आज तुम्हें शक होता है कि ध्वनि कैसे पहुंच जाती है, और देर भी नहीं लगाते, तुरंत ही पहुंच जाती, लगती देर की। और कहते ये हैं कि बीच में कोई, साइंस कहती है कि बीच में कोई माध्यम होना चाहिए जो साउंड कैरी करे। लेकिन साउंड कैरी होती है। अभी फोटो तुम एसएमएस से भेजते हो ना फोटो, पॉसिबल है ना? मैंने कभी नहीं भेजी। अभी मान लो किसी को भेजनी हो, यहां से फोटो ली, अब कैसे पहुंच जाती बाबा? कुछ है जो दिखता तो नहीं लेकिन है। जो नहीं दिखता और है वही इंपॉर्टेंट है। वो अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म को जानने के लिए अति सूक्ष्म होना पड़े, और कोई उपाय नहीं। अब टेलीफोन तो कोई भी इस्तेमाल कर लेता है गुट गुट करके, लेकिन अगर टेलीपैथी करने हो या उस तरह की कुछ बात करना हो तो उसके लिए फिर वो सब मेथड से गुजरना पड़ेगा। तो ध्यान में जब हम गहरे जाते हैं, जो हमारी ऊपर की परतें हैं जो कि बड़ी ही सुपरफिशियल, गहरे में जब हम जाते हैं तो ये सब संभव है, क्योंकि वहां पर सब एक है। ऊपर लहर बड़ी हो या छोटी हो, एक बड़ी लहर एक छोटी लहर, लेकिन नीचे दोनों सागर से जुड़ी है। लहर को अगर बोध आ जाए तो वो समझेगी कि अच्छा मैं बड़ी हूं, तू तो बहुत छोटी है जी, तेरा अस्तित्व ही क्या है। लेकिन बड़ी लहर भी वहीं गई, छोटी लहर भी वहीं गई, वहीं से आई वहीं से गई। फिर कभी अपने आप ही सवाल का जवाब मन में जन्म लेता है,
मजे की बात ये लग रही है कि जवाब स्टाइल में आपकी कॉपी करता है, लगता है जैसे आप ही बोल रहे हो। ये इसलिए होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को प्रेम करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी नकल करने लगते हैं। और ये मनीष हंस रहा है, पता क्यों हंस रहा है? वो जब भी कुछ खाता है ना, चम्मच में लेता है तो पहले यूं यूं करता है। कुछ गिरने वाली चीज नहीं भी तो यूं करता है। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्यों करता रहता है, मेरे बार बार ध्यान उसमें गया। एक दिन मैंने उसको बताया कि ये तो चम्मच में ऐसे लेता है और ऐसे ऐसे करता है, फिर वो खाखरा लेगा तो करे तो उसको भी ऐसे ऐसे करेगा, रोटी का टुकड़ा लेगा ऐसे परोसेगा तो उसको भी ऐसे ऐसे करेगा, चावल या दाल लेगा वो भी ऐसे ऐसे करेगा। अब मैंने इतनी बार ऑब्जर्व किया कि मेरे को पता नहीं चला कि वो मेरे में आदत घुस गई। अभी मैं कुछ खा रहा होता हूँ तो अचानक मैं देखता हूँ कि मैं मनीष की तरह करूँ। तो जहाँ थोड़ी प्रेम का तत्व होता है, अभी शुरू शुरू में, अभी तो नहीं। कहते हैं मेरे बारे में, लोग कहते हैं कि मैं ओशो की डुप्लीकेट कॉपी था। मैं उनको 69 में मिला, 70 में मैं उनके पास चला आया, 71 में करीब 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उन्होंने मेरे को एक कीर्तन ग्रुप बना के 10 सन्यासी दिए कि जाओ घर घर गली कूचे में मेरा प्रचार करो। निकल पड़े। अब मैं गांव गांव जाके 3 दिन ठहरते थे हम। जैसे मान लो मैसूर में आए तो मैसूर में 3 दिन ठहरे, तो पब्लिक मीटिंग करते थे, रात को सुबह डायनमिक करते थे, डिवाइन हीलिंग करते थे, दिन भर किताबें बेचते थे, दुकानों में जाके, स्कूल में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, ओशो की। और वो किताबें बेच के जो पैसे आते थे उसमें 40% कमीशन मिलता था। मुफ्त नहीं मिलती थी किताबें बेचने के लिए, उससे हम अपना खर्चा चलाते थे। तो जिस गांव में मैं जाके पब्लिक मीटिंग कर रहा हूँ तो मेरा उठना बैठना देखना बोलने का स्टाइल बिल्कुल ऐसा था जैसे वो शो। कई बार तो गलतफहमी हो जाती थी, खास करके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जब हम घूम रहे थे तो अचानक किसी ने लाउड स्पीकर पे आवाज़ सुनी, सुना था क्या हमारे गांव में ओशो आए हुए हैं, मैंने रजनीश आए हुए हैं। उस टाइम आचार्य रजनीश उनका नाम था। वो आके देखते थे ये तो कोई और है। अब कह सकते हैं कि ओशो की नकल क्यों करता था, मैं नकल वकल नहीं करता था, वो ऑटोमेटिक था। इतना उनको प्यार से, इतना गौर से देखा था। अब मैं कोई देवानंद की नकल तो कर नहीं सकता, और नकल ही करनी हो तो अपने गुरु की करनी चाहिए, तो वही करता था। पर वो सहज थी, वैसे बोलना वैसे चलना, और उसी बहाने थोड़ा होश रहती थी, ध्यान रहता था। बराबर। अब उनकी बात ही कहनी है, उनके शब्दों में ही कहनी है, तो वैसे ही होता था। तो ऐसा हो सकता है कि जब हम किसी के प्रति बहुत प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, सहानुभूतिपूर्ण हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम में प्रवेश कर जाता है और उस तरह की बात होने लगती है। तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, अगर कुछ अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। फिर भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड व्यक्ति की अंतिम गति में कुछ फर्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तूने पूछा है ना कि दूसरी संगीता है? हाँ, ये संगीता। ओके 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 ओके। ये बहुत अच्छा प्रश्न, आज तक किसी ने नहीं पूछा।
पिछली बार भी जब तुमने प्रश्न पूछे थे तो मेरे को एक बात साफ थी, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में इस सब से बचने की बात चलती रहती है। संभवतः वो पीछे से पुश करते हैं और तुम्हारी, मेरा गैस गलत हो सकता है, पर मैं ऐसा लाल बुझक्कड़ हूं, मैं सीधी बात करता हूँ। खुदा की मर्जी से मेरे को कोई सिखाया नहीं गया कल्चर क्या होता है, सिविलाइज्ड व्यक्ति क्या होता है, अनगढ़ आदमी। तुम्हारा बैठना, तुम्हारा पूरा जो गेटअप है, कहीं ना कहीं तुम इसको अवॉइड करना चाहती हो। शायद अवॉइड इसलिए भी करना चाहती हो क्योंकि वो फोर्स करते हैं। दैट इज माई गेस, आई मे बी रॉन्ग। अब तुमने उसकी अति कर दी, एकदम से लास्ट सवाल पूछ लिया एक्सट्रीम, कि अगर रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड की गति में कुछ फर्क नहीं है तो रियलाइज्ड होने की जरूरत क्या है, हो जाए। यही क्वेश्चन है ना, काय के लिए इतने लफड़े में पड़ना। अपने प्यारे प्यारे दो बच्चे पूना में छोड़ के ऊपर से 10,000 रुपये खर्च किए, ऊपर से प्लेन का खर्चा किया, इधर आए किस लिए करना? जब दोनों की गति एक है तो किस झंझट में पड़ना, है ना? अब बोल क्या जवाब दूं तेरे को? क्या रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड व्यक्ति की अंतिम गति में कुछ फर्क है? सच्ची पूछे तो पता नहीं, बहुत सारी बातें मेरे को नहीं पता, उनमें से एक ही है। अब ये तो मैं जब विदा होऊंगा तब समझ में आएगा कि कुछ फर्क है कि नहीं। टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम नॉट ट्रिकिंग, मैं कोई ट्रिक नहीं मार रहा। कोई मुझसे पूछे कि पूर्व जन्म होते हैं क्या, कोई वापस जन्म लेना पड़ता है कि नहीं, अब ये मैं आज तक नहीं सुलझा पाया, मेरे को नहीं पता। ये एक और सवाल है, लेकिन लोग मानते हैं, मेरे को शक है कि पूर्व जन्म होता है। एक बात पक्की है, एक चीज तय है कि अगर होता है तो भी, नहीं होता तो भी, अपना काम फिनिश, अपन वापस नहीं आने का, हो जाए। दैट इज फॉर श्योर। इसलिए कुछ पेंडिंग रखता नहीं मैं, जो आता है उसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। कुछ लोग मेरे साथ भी फंस जाते हैं उस कंप्लीट करने में, उनको भी करना पड़ता है मेरे साथ, रेजिस्टेंस होती है, करना नहीं चाहते, पर गुरुदेव। तो सच पूछे तो संगीता नहीं पता मेरे को, अंतिम गति में कुछ फर्क है। शांति से मरता हो, गैस वर्क, अत्यंत शांत होगा, मस्त होगा, घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। आम आदमी जो है ना, छोटी छोटी बात से इतना आतंकित होता है, मौत आ गई तो कितना आतंकित होगा, बेहोश हो जाएगा, होश में नहीं मरेगा। कहते हैं कि होश में मरने पर अंतिम गति होती है, मोक्ष होता है, मुक्ति होती है। अब अगर कोई पहले से ही होश में चला गया है तो उसका तो काम पहले से ही निपट गया, तो पहले से ही मर गया। लेकिन जिसका नहीं निपटा और अगर मरते वक्त वो होश पूर्वक मरा, तो कहते हैं कि होश जो है वो गैर तदात्म की स्थिति है, नॉन आइडेंटिफिकेशन। वहां पर कोई चीज जो है ना तुमको चिपक नहीं सकती, कोई विचार, कोई भावना, कोई कामना, कोई तृष्णा, कोई वासना, कुछ तुमको छू नहीं सकता। तो गैस वर्क ये है कि जब तुम होश में होते हो तो कैसा होता है, तो मौत के क्षण में भी घटेगा जो भी घटता होगा, उस वक्त अगर होश है तो गति बड़ी सुंदर हो सकती है, ऐसा गैस वर्क है। पर गैस है इसलिए बोल रहा हूं गैस,
जो व्यक्ति पहले ही होश से भर जाता है, कहते हैं कि जीवन मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में मुक्त हो गया, मतलब जन्म मरण के पार हो गया। अब जन्मता मरता क्या है, ये जरा रिसर्च का सब्जेक्ट है। तो यकीनन ऐसा लगता है कि बहुत फर्क होगा। जो अनरियलाइज्ड आदमी है उसकी बुरी हालत है, हर तरह से बुरी हालत है। और रियलाइज हो सकता है, पूरी संभावना मौजूद है, तो क्यों नहीं फिर। और रियलाइज हो जाता है तो मजा आ जाता है। अब जिनके तुम गीत गाते हो या टेपे सुनते हो, कबीर हो, मीरा हो, इतने संत हैं, इतने भगवान है, काय के लिए रोज घंटी बजाते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते बैठ के, किस लिए करते हो। कुल फर्क क्या, रियलाइज है और क्या। तुम रियलाइज हो जाओगे, तुम्हारी फोटो लग जाएगी वहां पर, तुम्हें भी कस्टमर मिल जाएंगे तुम्हारे हिस्से के। रियलाइज होने में थोड़ा सुख शांति ज्यादा है। जान छूटे लौट के बुद्धू घर को आए। चलो नटराज करेंगे आज फिर, आपको पता है कैसे करना है, ठीक है।